going to start with transportation in plants. A very important topic and a one that takes a time to understand because the topics we were doing pastly that were easy, something we had idea of. But when it comes to transportation in plants, the only thing we know about is xylem. If you want to know about xylem more and the mechanism in more detail, you can refer to the video I have posted before. The link will be in the comments below. Anyways, let's start here. We know xylem transports H2O and minerals. How we do that? Let me try to draw a diagram. I'm just drawing the trunk. Okay, this is the trunk of the plant. Here is its roots. Okay. Sorry if it's bad drawing, but I can't help. Okay. Okay. This is a soil. And under the soil there are roots. Let me just close it in a. Okay. This much is clear, the trunk and the roots. The soil is the place. Soil is where we get our water and minerals. Okay. Now this soil has water and mineral. What are minerals here? Obviously the minerals in the soil present are the minerals vital for a plant like calcium, magnesium and so on. But the minerals are not there in a powder form obviously. They are not just kept like that and then the roots will take up, okay, this is the minerals, okay, your calcium, let us go there. It's not gonna happen, you know that. And that's why only that we add manures and fertilizers which are nutrient rich in the soil so that the root can take up. Root तो सब कुछ ले लेगा soil में जो भी होगा, whether कोई ऐसा mineral जो कि excess है already plant में or the nutrients which are not needed. Plant soil से सारे nutrients लेगा. इसलिए हम लोग nutrients जब soil में डालते हैं so we just check whether that nutrient is important for the plant or not. Okay, that's not in our syllabus. That's not something we need to talk about here. We need to talk कि होता क्या है. Okay. So roots में roots here होते हैं. Let me just ये जो एक ये है that are root hairs. Okay. These root hairs take up the water. Okay. How? Let me just draw. एक root hair को मैं यहाँ से मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ. Okay. मैं इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ. It's something like this. Oh, my drawing sucks. Okay. तो ये कैसे दिखते हैं? They are something like this. Root hair. They are really very small, but here I have just enlarged them. I am focusing on one root hairs, and we have many root hairs here in the roots, right? तो होता क्या है? This is one root. This is your soil. Soil has H2O, that is your water, and calcium ions, magnesium ions. Now in your textbook in NCERT, there's written that root hairs take up the ions that create a concentration change in difference, which leads to water in it. When I read that line, I was pretty confused because what ions are taking up, how, why, then it starts taking up water, messed up, right? Now listen to me carefully. Soil में we have water, we have calcium, we have magnesium and many more ions that you can Google about that the ions. Just a second, there's a light issue. Okay, so we are back. Let us continue with that. So जो हमारे पास ions है, I was saying that you can Google about it. That what are the different ions present in a soil. Okay, here होता क्या है? This root here takes up this ions. Root here absorbs this ions. ठीक है? Now let us say कि ions absorb हो गए. इसके अंदर यहाँ कैल्शियम का भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया. और अब soil में क्या है? थोड़ा बहुत H2O भी आ गया. But mostly H2O यहाँ है soil में. और root here में कम H2O. और बाहर तो है ही नहीं अब कोई ions. या आप बोल सकते हो बाहर जो है ions कम है. I think इतना समझ आ रहा होगा. Let me just draw it a big one. Okay, so root hair ने
कैल्शियम, ये पूरा सॉइल ही मान लो, ठीक है। ओके, रूट हेयर ने आयंस ले लिए, आयन से अंदर ज्यादा, आयन से कम वाटर है। मैं एक स्पेसिफिक रूट हेयर की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे रूट हेयर सेम मैकेनिज्म में काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपकी बुक में लिखा है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स टेक अप द आयंस, आयंस इन द सेंस ऑफ कैल्शियम, पॉजिटिव, magnesium, these are the ions your root hair takes up from the soil, and with the ions it takes a bit amount of water, but large amount of water is still present in your soils, and this time ions in the soil is less. Why ions are less in the soil? पहले आयंस बहुत सारे थे सॉइल में, बट जब हमारे रूट हेयर ने आयंस ले लिए सॉइल से, सो नाउ आयंस आर लेस हियर, मोर देयर। नाउ द थिंग इज, एक क्वेश्चन आता है कि ये आयंस रूट हेयर ने लिए कैसे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से आयंस जो सॉइल में थे वो रूट हेयर्स ने ले लिए। अब उससे क्या हुआ, देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब यहाँ आयंस ज्यादा है, यहाँ आयंस कम है। और हमें पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, इक्वल जब तक ना हो जाए तब तक इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। लाइक यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, तो आयंस अंदर चले गए, लेकिन आयंस अंदर ज्यादा हो गए, बाहर कम, तो फिर आयंस बाहर आने चाहिए, है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुना, जस्ट फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड थिंक, देन टेल मी व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, बट प्लीज फोकस। Root hairs took up the ions, that is basically these ions. After taking up these ions, in the root hair, ions concentration is higher, and outside in the soil, in the environment, ions concentration is low. तो रूट हेयर ने डिफ्यूजन से आयंस ले लिया और कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ, तो पहले तो आयंस यहाँ ज्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, दैट मेक्स सेंस, यू नो, वी डू। ओके, नाउ if there is a concentration difference of ions की soil में कम है, रूट हेयर में ज्यादा है, तो if we think practically, तो डिफ्यूजन होता है कि जहाँ कम होता है उधर चल देता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर यहाँ ज्यादा पानी है, यहाँ कम पानी है, तो पानी उधर चल देगा, इधर ज्यादा पानी है, यहाँ कम पानी, तो पानी इधर आ जाएगा। सेम गोस विद थिंग्स लाइक दिस आयंस एंड थिंग्स। वी टॉक्ड अबाउट डिफ्यूजन एज वेल इन द प्रीवियस क्लासेस, तो पता है कि ज्यादा से कम में जाता है, मतलब कंसंट्रेशन हमें इक्वल करने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूजन इज व्हाट, वो चाहेगा कि आयंस अंदर भी इक्वल हो, बाहर भी इक्वल हो। अभी वाली सिचुएशन इज समथिंग डिफ्यूजन डजंट लाइक्स, क्योंकि इधर आयन ज्यादा है, इधर आयन कम है। बट होता क्या है, this root here actually works hard to take up these ions, because these ions are really necessary for their growth, right? Calcium, magnesium, these are important एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो आयंस तो वो बाहर आने देगा नहीं। अब होता क्या है कि आयंस के साथ पानी भी गया रहता है। एक सॉइल में जब वाटर है, आयंस है, और जब डिफ्यूजन हो रहा है, तो सिर्फ आयंस आयंस, प्लांट्स आर नॉट दैट कि आयंस ऐसे से छाट के ले लेंगे, पानी भी अंदर गया, तो वाटर लेवल बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, इस आयंस के लेन देन की वजह से। ओके, आई एम जस्ट रिकैलकुलेटिंग व्हाटएवर आई हैव सेड अगेन। डिफ्यूजन से आयंस रिड्यूस करने लिए, इसकी वजह से आयंस का तो डिफरेंस हुआ ही, लेकिन वाटर का भी डिफरेंस हुआ, वाटर अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। अब ऐसे तो आयंस बाहर आके इक्वल कर सकते थे कंसंट्रेशन, बट दे विल नॉट डू, बिकॉज रूट हेयर हैज वर्कड हार्ड टू गेट अप दिस आयंस। सो व्हाट दे विल डू इन एक्सचेंज इज they will take up the water as well, they will take up the water as well, क्योंकि water and are actually mixed together, they are not very, you know, अलग अलग नहीं है। तो क्या होता है, वाटर अंदर जाने लगता है कि वाटर की तो कंसंट्रेशन भाई सेम हो जाए, दिस वाटर स्टार्ट्स गोइंग इन, ये तो इधर ही रह गया आयन, अब वाटर जो है अंदर जाने लगा, ये पूरे में वाटर जा रहा है ना, वाटर हमारे रूट हेयर में भर गया, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस ग्रीन पेन टू से कि वाटर इज ऑल अप देयर, ओके, कैन यू सी वाटर पूरे रूट हेयर में पहुंच चुका है, वी डोंट नीड टू वरी, आधा काम तो हो गया, यहाँ तक तो पहुंच गया, चलो पानी। अब ये जो प्रेशर से ऊपर जाता है, उससे थोड़ा ऊपर तक तो चला गया पानी, ठीक है, बट अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। इसने जो पानी लिया वो रूट हेयर से जाइलम में जाके थोड़ा ऊपर तक चला गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। सब जो अभी मैंने बताया, दैट इज नथिंग बट
root pressure, because root is the one who's working up here, right? रूट ने ही पानी लिया, आयंस लिए, फिर इतना ऊपर तक तो पहुंचा दिया till a certain level water reaches through root pressure, but you know against gravity जाना is hard. So what now? Let us talk. इतना clear होगा I guess. I'm wrapping it up. I am telling you the same thing said in the NCERT in an elaborated way, the way possible. But I'm not having anything of the senior classes because I don't want to make things confused. So till a certain level, water goes up. Now, your plant is this big and very big, and there are small branches over there. Sorry for my bad drawing. पानी let's say यहाँ तक पहुँचा. To a certain level पानी पहुंच गया through root pressure, but what now? We have to go till the shoot. अगर कोई प्लांट है तो आधे में जाके तो होगा नहीं, पूरा ऊपर तक जाना पड़ेगा ना. Also for the photosynthesis के लिए भी तो यहाँ ऊपर जो लीव्स है यहाँ तक पानी जाना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस है इसमें पानी जाना पड़ेगा, जाइलम बेसिस पूरे में पानी पहुंच जाएगी. Then photosynthesis can happen, but through root pressure we could just get till this point. अब उसके ऊपर क्या करेंगे? उसके लिए let us first take an example. If you have a straw, you can just take it out. अभी आप खुद कर भी सकते हो. Or else this is something we all know. एक straw जब आप लेते हो, let's say ग्लास में आपने straw डाला, ठीक है? तो straw डालते सबके पानी खुद ऊपर आने लगता है. Obviously not, right? आप ऐसे ग्लास में straw डालोगे तो खुद यहाँ टिप तक आने लगता है कि अब आप पी लो. ऐसा तो नहीं होता ना, right? Obviously it doesn't happen. How can we say that liquid will travel against the gravity till here and then I can drink it? It doesn't make sense. Although यहाँ पे gravity के opposite जाके root pressure do so commendable work, but anyways, तो how do you drink from a straw? Let's say वो जो straw है, that is nothing but your xylem vessel. जो glass है पानी का, that is the way from your roots till a certain level जहाँ तक पानी root pressure ने पहुँचा पाया. अब आपको क्या करना है? आपको जाइलम वेसल्स के ऊपर लेट्स से यू आर दी शूट टिप, ठीक है? लेट्स से आपका जो माउथ है वो ये टिप है. अब जाइलम वेसल्स को आपके मुंह तक पहुंचने यानी टिप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू सक इट. अब चूसोगे, आप पियोगे. तो नाउ यू विल से कि हम तो चूस के पी लेंगे, विल सक इट फ्रॉम द स्ट्रॉ एंड या विल रीच इट. बट हाउ अबाउट द प्लांट्स? तो प्लांट्स का वो सक वाला काम कौन करता है? Let me choose, write it from here. Transpiration. Now transpiration क्या होता है? The loss of excess water through stomata. Stomata जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? Stomata दो काम करता है. First is the gaseous exchange, second is the loss of excess water, that is the transpiration. So the thing we did from the straw that we sucked it, so that water can travel from the glass till out. Same way transpiration होता है जो एक suction करता है. Let's say ये आपका straw था, ये आपका माउथ था, आप चूस रहे थे तो पानी ये ऊपर आ जा रहा था यहाँ तक, क्योंकि आप यहाँ थे, आप चूस रहे थे, इससे ऊपर आ रहा था. Same happens with transpiration. Transpiration एक same काम करता है. What it does? It evaporates the water. Excess water जो होता है through stomata, it releases excess water. तो अब क्या होता है? यहाँ से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो गया, मीन्स वाटर इवेपोरेट होना, एनवायरनमेंट में जाना, एक्सेस वाटर का रिलीज स्टार्ट हो गया है. तब क्या होगा? इससे यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, एक खिंचाव बनेगा. ओके, तो इस खिंचाव से ये पूरे में जाने लगेगा. समझ आई? द प्ले इज ऑल अबाउट सक्शन. Let me repeat myself. The example we took about the straw and the juice, just keep that in your mind. Transpiration, excess water गया. The same way जब हम पी रहे थे तो हम पानी ऊपर या जूस अपना ऊपर खींच रहे थे, खिंचा रहा था, हम पिए जा रहे थे तो पानी ऊपर खिंचाया जा रहा था अगेंस्ट ग्रेविटी. Here in the same way transpiration हो रहा है. Let's say environment के पास पानी जाते जा रहा है. So now this water which goes to the environment, keeps going to the environment, creates the suction, same way as we had in a straw. तब जाइलम वेसल्स में से पानी ऊपर तरफ खिंचाव होने लगता है,
खींचने लगता है. ओके, इन हिंदी खिंचाव, वी कैन से सक्शन, जिसकी वजह से पूरे ऊपर तक पहुंच जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी. दिस ऑल हैपनिंग अगेंस्ट ग्रेविटी. सो अब पानी रूट टिप तक पहुंच गया एंड वी आर नाउ रन विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स in of water obviously. So the thing that help us to do is root pressure and transpiration. These two things help us to transport water. Obviously xylem is there, but xylem is acting just like a straw. straw में जैसे खुद ही पानी नहीं पहुंचने लगता है, वैसे ही in the same way यहाँ पे भी this xylem acts just like a pipe, just like a straw, hollow straw. मैंने जाइलम का आपको स्ट्रक्चर भी बताया था. इट्स हॉलो, इस तरह का है, पानी अंदर से पास होता है, बट जाइलम सिर्फ इज अ कनेक्टिंग टिश्यू. इट एक्चुअली डजंट सेज कम्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. इट्स जस्ट अ वे यू कैन से. बट द टू थिंग्स दैट हेल्प इज रूट प्रेशर. टू अ सर्टेन लेवल वाटर पहुंच जाता है फ्रॉम रूट हेयर से पानी करते हैं आयंस की कंसंट्रेशन से. देन from here, from a certain level transpiration starts and then it goes all till the shoot, tips of the shoot. Okay, so this is what happens here. Now let me see if we are okay. One more thing. अब रूट टिप यहाँ तक पहुँच गया तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, but thing is that only 2 to 3%. I think this is the correct. You can check it in your textbook once. But as long as I remember, 2 to 3% ही water का is used for photosynthesis. Only 2 to 3% is used for photosynthesis. Then you will ask that plant से इतना सारा पानी लेता है तो जाता किधर है? तो photosynthesis के लिए पानी ऊपर पहुंचाने के लिए actually transpiration होता है. Most of the water actually gets away from the process of transpiration. Okay, so transpiration हुआ. Most of the water actually gets evaporated, but 2 to 3% is used for photosynthesis. But don't you say that then photosynthesis is not important? Your water is not important for photosynthesis. Photosynthesis is very important, and without water, have you ever thought that without water we'll do photosynthesis? No, right? In the equation, it has water, so water is vital for the process of photosynthesis. I hope this is clear. Let me just, elaborate it if you want to take notes, so you can refer to it what the steps I am telling you. First step, root hairs take up the ions from the soil. First point, just a sec. Root hairs take up the ions from the soil. आप ions को ब्रैकेट में ये सब लिख सकते so that you don't get confused, क्योंकि मैं confused हुई थी. After that, this creates a difference in the concentration. Therefore, root hair takes up the water. ठीक है? First, root hair takes up the ions. This creates a difference in the concentration. Therefore, root hair takes up the water. And then water enters in the xylem vessels. Now, यहाँ तक आया root pressure. After that, transpiration. So now you will write. Now to transport water to the tip of the plants, you will write to transport water to the tip of the plants. Transpiration is the process. Transpiration का you will write the definition. Transpiration is the process of removal of excess water from the plants through stomatal pores. Through stomatal pores. Now, when transpiration occurs, next point, when transpiration occurs, this creates a suction or space. I'm not suction. Let me just check. Okay. And therefore, water travels all the way to the tip of the plant. Water travels all the way to the tip of the plants. And this is how transportation of water and minerals in plants through xylem occurs. ठीक है? So with this we are done with this topic. In the next video we are going to talk about transportation in plants of food. How food is transported in plant. Although we have talked about phloem,
but we'll talk about the mechanism. Also, the question कैसे आएगा exam में? So it will come like, explain the mechanism of transport of H2O in plants. They are going to give you like this, only mechanism word use hoga. So don't get confused with this word. Mechanism in the sense is you have to tell about how xylem works, what is the root pressure, what is transpiration. You have to sum up all the things up there. And rest you can just check through the marks कि अगर 3 mark करे तो थोड़ा short में, 5 mark करे तो थोड़ा elaborated way में. Anyways, we are done with this. I hope you like my video. If you do like, so like, subscribe and share my channel. Also, don't forget to ring the bell hand button so you will get all the notifications of my channel. And I would like to request you that subscribe. And keep learning. Till then, bye and have a wonderful day ahead.